Good morning, everyone. On this present morning, I, Lakshita of class 8th, welcomes you all to the Children's Day Assembly of our school. Today is our special day. It's Children's Day. To enlighten our special day, I would like to invite some students of primary wing to recite the English prayer. Now, Dhairya Panchal from Primary Wing will present the thought in front of you. Good morning, everyone. Myself, Dhairya Panchal, class 1st B. Today's thought is to be successful in life. What you need is education. I repeat my thought: to be successful in life. What you need is education. Thank you. Now, it's the time to call my friend Rakhi to tell you more about Children's Day. क्या आपको पता है आज क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? आज बाल दिवस है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वह बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। अब मैं कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रखती हूँ। राह प्रेम की दिखलाते थे चाचा नेहरू नहीं किसी से डरते थे, आगे ही आगे बढ़ते थे। अमन चैन था उनका सारा, दुष्ट फिरंगी जिससे हारा, अंग्रेजों को दहलाते थे चाचा नेहरू। आजादी पर अधिकार हमारा, ऊंचा रहे तिरंगा प्यारा, बढ़कर हम देंगे कुर्बानी, गरज उठा था ये सेनानी, नदिया सागर खौलाते थे चाचा नेहरू। सीने पर हंसता गुलाब, हर ढंग उनका लाजवाब, बच्चों में बच्चे बन जाते, साथ साथ के ही लगते, इसलिए इतना भाते थे चाचा नेहरू। धन्यवाद। To make this day special one, some students from Primary Wing will present their lovely performances. सुप्रभात, मेरा नाम खनिका है। मैं कक्षा पहली की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बाल दिवस। हम नन्हे मुन्नों के जीवन में खुशियाँ लाता बाल दिवस, प्यारे चाचा नेहरू की याद दिलाता बाल दिवस, हमको भाता बाल दिवस, मन महकाता बाल दिवस। जन्मदिन है आज देश के प्यारे लाल जवाहर का, आजादी के खातिर छोड़ा जिसने चैन सुख घर का, जन जन के प्यारे नेता की याद दिलाता बाल दिवस, हमको भाता बाल दिवस, मन महकाता बाल दिवस। आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रकृति, मैं 35 तक कक्षा 1 की छात्रा है। हम आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चाचा नेहरू। चाचा नेहरू का बच्चों से है बड़ा पुराना नाता, जन्मदिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। चाचा नेहरू ने देखा था नव भारत
3rd week. As you all know, 14th November, Chachaji's birthday, to celebrate it as Children's Day every year. So let's sing a song, our Chachaji. Chachaji, Chachaji, this day is for you. Chachaji, Chachaji, we love you so much. Chachaji, Chachaji, this day is for you. Chachaji, Chachaji, we love you so much. You love children deeply. You work for them bravely. You love children deeply. You work for them bravely. You fought for our freedom and made India stronger. You fought for our freedom and made India stronger. We wish on this Children's Day, may all your dreams came true. 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 Happy Children's Day to everyone. Thank you, friends. Very hearty good morning, everyone. Today I, Jesus Das, welcome you all in today's special assembly on Children's Day. We all know we celebrate Children's Day on 14th November, but why do we celebrate this day? Do you know that? Okay, I tell you. Today is 14th November. This day is celebrated as Children's Day all over India. 14th November is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Pandit Nehru had great love and affection towards children. Hence, his birthday is celebrated as Children's Day every year. He liked to be among children. He was very loving and caring towards children. Hence, children called him Chacha Nehru. Pandit Nehru always said that children are the future of the nation, and hence they should be raised with love, care, affection. I hope this information helped you. A very happy Children's Day to all the children in the world. Thank you. Have a nice day. Thank you, friends, for such amazing performances. Once again, wish you a very happy Children's Day. Thank you.